हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अबू, एमडी मेडिसिन। आज हम कुछ ऐसे सिंड्रोम्स के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी कॉमनली नीट में आस्क्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, ये सीरीज आपके लिए बनाई गई है सो दैट यू कैन रिवाइज एवरीथिंग इन अंडर लेस देन 2 minutes. So let's talk about, without any further delay, these syndromes. That is, the first is Fanconi syndrome and Gentleman syndrome, right? So always remember in where the defect lies. So in case of Fanconi syndrome, the defect lies in the proximal convoluted tubule. जो PCT है, that is responsible for absorption of 65% of everything, right? So almost glucose जितना भी है, अमीनो एसिड्स है, जो बाइकार्बोनेट है, फॉस्फेट है, यूरिक एसिड है और सोडियम पोटेशियम क्लोराइड है, ये सब एब्जॉर्ब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, राइट? सो नाउ द डिफेक्ट इज इन द पीसीटी, राइट? नाउ व्हाट आर द कॉजेस? द कॉजेस कैन बी हेरेडिटरी. सेकेंड इज इश्केमिया. ऑलवेज रिमेंबर कि जो S1 सेगमेंट ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, राइट, इट इज डिवाइडेड इनटू S1, S2 एंड S3, राइट? सो दीज आर द थ्री कॉमन सेगमेंट्स जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का डिवीजन है. These are very prone to ischemia. तो अगर हाइपोटेंशन होता है या ब्लड लॉस होता है या कोई भी कारण से there is a drop in blood pressure, so these segments are affected. As a result of that, the absorption is affected, right? Next is multiple myeloma and nephrotoxins and drugs. This is important. How to remember that drugs affect PCT. कोई भी चीज़ अगर ग्लोमेरुलर से फिल्टर होती है तो the first thing which it will affect is which जो जहाँ पे वो जाएगी, that is the proximal convoluted tubules, right? So nephrotoxins and drugs commonly affect the PCT. Now, what will happen? So now see, if glucose is lost, right? So body has various compensatory mechanisms so that the body doesn't go into hypoglycemia. So usually these patients don't have hypoglycemia. अगर amino acids है, right? So body again has multiple mechanisms so that protein catabolism decrease हो सके. So these two will not lead to any major effect. The important thing is bicarbonate. अगर bicarbonate loss हुआ, the body will have metabolic acidosis. Now, the important thing is the major acidification of urine happens in the distal convoluted tubules. तो अगर PCT affect हुआ है, तो there will be acidosis, but it will be less severe as compared to DCT, right? Now, phosphate loss होगा, there will be hypophosphatemia. Now, once there is hypophosphatemia, the body activates the compensatory mechanism. As a result, there will be bone resorption, तो जिसकी वजह से कैल्शियम और फॉस्फोरस बोन से लीक होगा, and you can have an osteopenia, right? And as there is a loss of potassium, you will have hypokalemia. So always remember, in Fanconi syndrome, everything leaks out early because it is the defect in the proximal convoluted tubule.